Welcome, guys. Once again, Salman Khan with you in ITI Infinitive Training Institute. And today I will teach you in the first lecture. If you remember, I told you and I taught you about that word English is a game of verb and about the verb. But today I'm just going to tell you that what are the reasons that we Pakistanis cannot speak the English. Even we know English very well because our books are in English or syllabus are in English, each and everything that is in English. When we are writing, we can write, but when the time of speaking comes, okay, so that times we are just trembling and we don't know about that, that's how to speak it out. So today I will tell you the basics mistakes that we do and why we can't do. If you want to learn a language, okay, so there are two kind of language. What is noun? One is noun language, the language you know very well, and the other is unknown language. Let me explain you what does the mean of noun language and what does the mean of unknown language. Like, let me tell you, if you are talking about the English, so you very well know about the English, but if you are talking about the Pashto, Urdu, Saraiki or other language, might be, or Chinese, might be you don't know about that language. Let me tell you, if I teach you the noun language, like the language you know about that. So I know that you know about the noun. What does the mean of noun? Like, this is a marker, like, this is a whiteboard, like, this is my tie, this is a shirt, this is a wristwatch, okay, and a lot of things in this classroom you can understand about that. This is a fan, this is a chair, okay, each and everything. So no need to teach you guys about the noun because you very well know about the noun. There are even some nouns that even you don't know about the names of that nouns. In Urdu, like if I ask you what is the noun, what is the name of television in Urdu, so might be you don't know about that. What does it mean of this marker? Because marker and televisions are English words, these are not Urdu words. So we know very well about English, but we don't know about the Urdu. So पता चला कि उर्दू कोई ऐसी लैंग्वेज जिसको हम जानते हो, अच्छी तरह जानते हो, तो उसके बारे में हमें कैसे पढ़ाना है, और जिसको नहीं जानते. एंड लेट मी टेल यू द एग्जांपल ऑफ अननोन लैंग्वेजेस. लाइक अगर मैं आपको अरबी पढ़ाना चाहूं तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि यार दिस इज अ कलम, दिस इज यानी हाजा कलम, ये कलम है, इट्स मार्कर. हाजा कुरासी, कुर्सी को क्या कहते हैं. सो द फर्स्ट थिंग दैट, अगर दरवाजे का मैं कहूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि बेटा इसको बाब कहते हैं. बाद में पता चलेगा ओपन द डोर, यानी इफ्तल बाब. पहले बाब आएगा, पहले दरवाजा सीखेंगे आप, फिर उसको खोलना और बंद करना सीखेंगे. सो इन इंग्लिश व्हेन वी टीच द इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स, सो वी डोंट टीच देम नाउन और प्रोनाउन बिकॉज़ वी नो वेरी वेल नाउन एंड प्रोनाउन. सो और इंग्लिश इज स्टार्ट फ्रॉम वर्ब, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश. हमारी इंग्लिश वर्ब से स्टार्ट होती है. वर्ब का लेक्चर मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बट आ जाए जरा आपको थोड़ा सा और बताता हूं. एंड लेट मी एक्सप्लेन यू प्रोसेस ऑफ लर्निंग. ये तो थी नाउन और अननाउन लैंग्वेज की बात. आफ्टर दैट देयर आर 4 process of learning. One is listening, one is speaking, one is reading, and one is writing. What are the problems with we guys? हमारे साथ क्या problems है when we are talking about English, when we speak about English? हम English को यहाँ से सीखना चाहते हैं, reading and writing से. जो reading का क्या मतलब है? लिखना. राइटिंग, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना. इसीलिए हम कहते हैं कि जी जनाब पढ़ा लिखा है, वो यार बहुत पढ़ा लिखा है. पढ़े लिखे का इससे कोई ताल्लुक नहीं है. अगर कभी हमने लैंग्वेज सीखनी हो और लिसनिंग और स्पीकिंग के प्रोसेस से सीखें तो वो हमें आ जाएगी. बिकॉज the best way of learning that is listening, not reading and writing. Remember once again, जब आप रीडिंग और राइटिंग से निकलेंगे, लिसनिंग में आएंगे, then you can speak another language. Until you are here, you can't do that. Now let me explain you with some example of these. अगर कभी ये चीज जरूर हुई होती तो अल्लाह ताला नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान लिख कर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दे देते और कहते जाइए उनको दे दीजिए, वो आके और हम पढ़ लेते. नहीं, क्या हुआ? सुनाया गया बजरे जिब्राइल अलैहिस्सलाम. इट वाज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग. सुनते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कान से सुनते थे, इज़्न से सुनते थे और सीने में महफूज हो जाता था. फिर आके सहाबा कराम को सुनते थे, सुनाते थे. सुनने का अमल लिसनिंग, सुनाने का अमल स्पीकिंग.
This is the process from where we learn language. Not this is the process. जो इस process से जाएगा उसको लिखना पढ़ना आ जाएगा, but he or she cannot speak English. So once again, problem क्या होती है जब मैं यहाँ पे पाकिस्तान में किसी भी इदारे में स्पोकन इंग्लिश में जाता हूँ तो वो मुझे रीडिंग शुरू करवा देता है, जनाब 5 मुझे वो रोजाना लिख के देता है, वोकैबुलरी, व्हाट डज इट मीन वोकैबुलरी, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हुई तो भाई मुझे एक बात बताएं, जब ये रिक्शे वाला टैक्सी वाला इंग्लैंड चला जाता है तो वो क्या रोजाना 5 वोकैबुलरीज याद करता है? नो, वो सिर्फ लिसनिंग करता है और ट्राई टू स्पीक करता है. फर्स्ट थिंग इज दैट ट्राई टू स्पीक. इफ यू लिसन देन ट्राई टू स्पीक द सेम वर्ड्स. अगर आप इधर से जाएंगे तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी. वंस अगेन दिस इज अ बिग प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, और यही वजह है कि हमारी इंग्लिश जो है दैट इज नॉट परफेक्ट. हमें इंग्लिश आती है और हम समझते हैं दिस इज द प्रोसेस. नहीं, आई हैव हर्ड फ्रॉम अ हिंदू पंडित, मैंने एक हिंदू पंडित से सुना था कि बेटा हम 2 तरह से सीखते हैं. मेरे सपूत, हम 2 तरह से सीखते हैं. एक सुनकर सीखते हैं और दूसरी अब गिरकर सीखते हैं. गिरकर यानी गलती करके सीखते हैं, मिस्टेक से सीखते हैं. सो डू मिस्टेक्स. व्हाटएवर यू लिसन, ट्राई टू स्पीक इट आउट. Don't think about that. That is wrong or right. Let me explain. Let me give you another example of riding a bicycle. Bicycle जब आप चलाते हैं, गिरते हैं, बार-बार गिरते हैं, क्या बाइसाइकिल छोड़ देते हैं? नहीं, फिर उठते हैं, फिर उसके पर बैठते हैं, फिर चलाते हैं. बिल्कुल यही प्रोसेस जो है, आप बार-बार इसको करेंगे तो एक वक्त आएगा जो लोग आप पे हंस रहे हैं, जैसे साइकिल से गिरते हुए आप पे हंसते थे, वो हंसते रह जाएंगे और आप बाइसाइकिल एक दिन अच्छी चलाएंगे. आप यहाँ पे शर्माते हैं कि यार मैंने मास्टर किया हुआ है, मैंने एमफिल किया हुआ है, बट आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश. व्हाट विल द पीपल थिंक अबाउट मी? भाई आपने इंग्लिश नहीं सीखी, आपने रीडिंग और राइटिंग की थी, उसमें आप परफेक्ट है. क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था, आपने लिखकर एग्जाम दिया, यू गॉट पास, आप पास हो गए, बट यू आर नॉट ओवर हियर. सो वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, जो भी स्टूडेंट यहां से लैंग्वेज को सीखेगा, ही और शी कैन नॉट बी सक्सेस. हाँ, उसको आ जाएगी, दोबारा मैं कहूंगा आ जाएगी, लेकिन वो बोल नहीं सकेगा. दिस इज द थिंग्स इज दैट. तो जो मेरा प्रोसेस होगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू फ्रॉम हियर, फ्रॉम लिसनिंग, not from reading and writing, because you know reading and writing very well than me. मेरे पास PhD और MPhil के स्टूडेंट आते हैं. MPhil वाले स्टूडेंट और PhD वाले स्टूडेंट मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं. When I teach them, then they realize that sir, you're okay, you're telling okay. आगे हम क्या मिस्टेक्स करते हैं? We try to speak books English. हम बुक्स की इंग्लिश पढ़ते हैं. मैं बताता हूँ बुक्स की इंग्लिश क्या होती है. चलिए मैं कुछ सेंटेंसेस बताता हूँ. आपने मुझे ना खुद सोचे और मुझे बताएं, आपको इसकी इंग्लिश आती है? यार ये जरा चाय तो गर्म करके देना, यार ये जरा चाय तो गर्म करके देना. कि पूरा ऐसे नहीं, मुझे बताएं कि इसकी इंग्लिश क्या होगी. मैं सालन गर्म करने जा रही हूं, तुम रोटियां लगा लो, आ जाएगी इंग्लिश? ये आटा गूंद के देना जरा मुझे, आ जाएगी इंग्लिश? नहीं, बिकॉज आपने ये वर्ड लिसनिंग नहीं किए, तो इसको बोलेंगे कैसे? जब तक आप लिसनिंग में नहीं आएंगे, तो उनको सुनेंगे नहीं, कहीं से सुना नहीं होगा तो नहीं बताएं. आसान वर्ड्स है, मैंने आपको आसान सी चीजें बता दी है. यार ये जरा मेरे सॉक्स जो हैं, ठीक है ना, ये तो मुझे देना जरा, ये तो मुझे देना जरा. ये जरा की इंग्लिश क्या होगी? ये आपको नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि बिकॉज यू डोंट नो अबाउट दैट. क्या लिटिल सॉक्स? नहीं. आप इस तरह, क्योंकि आप करते हैं बुक इंग्लिश बोलते हैं, वर्ड टू वर्ड इंग्लिश बोलते हैं, वो नहीं चलती. यू विल हैव टू try to speak the words you have already listened out, जो आपने सुने हो. तो आप उससे फिर हम बुक की इंग्लिश पढ़ते हैं. जब मैं किसी बच्चे को कहता हूँ बेटा कल क्या किया आपने, वो कहता है सर yesterday I got up early in the morning, then I went to college, then I come back, then I got my. अब मैं उसको उर्दू में बताता हूँ, सर मैं कल सुबह सवेरे उठा, फिर मैं नाश्ता किया, फिर मैं उधर चला गया, फिर मैं क्लास में गया. ऐसा बोलते हैं ना. दिस इज नॉट द वे, दिस इज दिस वे. सो वी डोंट जज डिफरेंस ऑफ रिटन एंड स्पोकन. हमें राइटिंग और स्पोकन की जजमेंट का नहीं पता. एक्चुअली देखें, the thing is that the way now I am talking to you guys, this is not the books word, these are the words, okay, जो हम आम लाइफ में करते हैं, जब हम आम रूटीन में करते हैं. जब तक आम रूटीन की इंग्लिश को आपको नहीं आएगी तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते. आप जितने मर्जी बड़े से बड़े वर्ड सीख लीजिए, लेकिन वो यूज में नहीं है तो वो आपको नहीं आएंगे. सो वंस अगेन सिर्फ कहना इतना था कि जबान यहां से आती है, यहां से नहीं. जो लोग इसको यहां से सीखने की कोशिश करते हैं वो कभी जबान सीख नहीं सकते. और यही वजह है कि जब हम किसी स्पोकन इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो हमें वोकैबुलरी लिखवाते हैं, हमें टेंसेस करवाते हैं, और नहीं, वो तो उससे कहां इंग्लिश आएगी भाई.
that is very different. मेरा जो अगला लेक्चर है, the next lecture, that is about the future, that how we can talk in future, हम future में कैसे बात कर सकते हैं. And in that lecture I will tell you that if you want to speak English, okay, how you can speak English. So till that time you should wait for me. Okay, now goodbye and God bless you. Okay, think about this lecture and then discuss with me. My numbers is on my screens. Okay, you can call me, you can SMS me, you can even WhatsApp me, because your opinions is very respectable for us. Whatever you have problems, you can share that problems with me. Thank you once again.